वेलकम दोस्तों। मैं हूं देवेंद्र। मैं पहले रह चुका हूं अप्लाइड साइंटिस्ट। और आज के वीडियो में हम लोग एक देखेंगे एक जेन एआई ऐप जो बहुत क्लोज है प्रोडक्शन सिस्टम के। ऑफ कोर्स मैं थोड़ा स्ट्रेच कर रहा हूं और मेरे एक्सपर्टीज से थोड़ा बाहर है। बट ये जेन एआई एप्लीकेशन बहुत स्केलेबल होगा। हर चीज कुबरनेटिस में सेल्फ होस्टेड होगा। अ, इसमें एक सपोर्ट होगा कि ब्राउजर से हम लोग जुपिटर नोटबुक से एक जीपीयू इंस्टेंस लॉन्च कर पाएं और उसमें एक एक्सपेरिमेंट कर पाएं। ये सब चीज आज के डेमो में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग पिछले वीडियो में क्या सीखे थे। हम लोग थोड़ा सा एडब्ल्यूएस नेटवर्किंग के बारे में सीखे थे, जहां हम लोग एडब्ल्यूएस क्लाउड था। उसमें हम लोगों ने एक वीपीसी बिल्ड किया। उसके अंदर हमने पब्लिक प्राइवेट सबनेट बनाया। फिर हमने गेटवे बनाया, राउट टेबल बनाया। और ये पब्लिक सबनेट में एक ईसी टू इंस्टेंस भी बनाया था। अब ये ईसी टू इंस्टेंस यहाँ बस पब्लिक सबनेट में रख देने से ऐसा नहीं होगा कि एक्सेसिबल होगा। वी हैव टू मेक इट एक्सेसिबल। इसके लिए हमने एक राउट टेबल बनाया पब्लिक सबनेट में और इसको गेटवे के राउटर से कनेक्ट किया। और ऐसा करने के बाद ये ईसी टू इंस्टेंस में इंटरनेट एक्सेस होने लगा और बाहर से अंदर लॉगिन भी कर पा रहे। इसके बाद हमने एक ईसी टू इंस्टेंस बनाया प्राइवेट सबनेट में। ऑब्वियसली बाहर से अंदर एक्सेस नहीं हो सकता, जो कि सही था। बट जब हम लोग अपडेट करना शुरू किए लाइब्रेरीज, तो इसको इंटरनेट एक्सेस भी नहीं था। तो वन साइडेड एक्सेस, बेसिकली इसको इंटरनेट का एक्सेस मिल जाए बट कोई और इसको एक्सेस ना कर पाए, वो करने के लिए हम लोग एक नैट गेटवे बनाए पब्लिक सबनेट में। और प्राइवेट सबनेट का राउट टेबल को इस नैट गेटवे से कनेक्ट कर दिए और इस तरीके से इसको इंटरनेट का एक्सेस मिल गया। नेट गेटवे का फुल फॉर्म है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। उससे क्या होता है कि बाहर का चीज अंदर नहीं आ पाएगा, अंदर का चीज, सॉरी, बाहर का यूजर अंदर लॉगिन नहीं कर सकता, बट अंदर का यूजर बाहर का इंटरनेट एक्सेस कर सकता है। तो ये हम लोग का फाइनल फॉर्म था और ये हम लोग देखे थे कैसे बनाएंगे एडब्ल्यूएस में। ये पिछले वीडियो में देखे थे। आप वापस रेफर कर सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। तो ये है मेरा जेने का डेमो। आप देख सकते हैं ये पब्लिक यूआरएल है जो लोड बैलेंसर का एंड पॉइंट है इन अ वे। और ये अमेजोन एडब्ल्यूएस में होस्टेड है। इसमें दो ऑप्शन है। हम शॉपिंग असिस्टेंट भी चूज कर सकते हैं, हम लॉयल्टी प्रोग्राम का एजेंट भी चूज कर सकते हैं। तो पहले हम लोग शॉपिंग असिस्टेंट का चूज करेंगे। इसमें हम लोग एक क्वेरी डालेंगे, प्लीज सजेस्ट वॉकिंग शूज फॉर अ 60 ईयर मेल इन टैबुलर फॉर्मेट। तो सबमिट कर देंगे और हम देख सकते हैं कि कोई इशू आ गया है। तो क्या हुआ था कि मेरा ओपन एआई का क्रेडिट बैलेंस 0 हो गया था। तो रिचार्ज कर लिया $10 का। फिर से ट्राई करते हैं। ओके, ठीक है, चल रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने पहले क्वेरी डाला, प्लीज सजेस्ट वॉकिंग शूज फॉर 60 ईयर मेल इन टैबुलर फॉर्मेट। और फिर इसने कुछ कुशन शूज का ऑप्शन दिया, दो ऑप्शन दिया। और जेन एआई के साथ जो भी कर सकते हैं, जैसे कि चैटिंग, वो आप यहाँ भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लिख सकते हैं कि रिजल्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर बाय प्राइस कर सकते हैं। तो इसको सबमिट। देखिए, पहले असेंडिंग ऑर्डर में था, असेंडिंग नहीं, रैंडम था। तो पहले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर था। फिर जब सॉर्टिंग करने बोला तो बड़ा फिर छोटा आ गया। तो ये भी चल रहा है। और ये हमारा शॉपिंग असिस्टेंट है। वो एक रैग सिस्टम है जो एक स्पेसिफिक ओपन डेटा पे रैग चल रहा है। वो डेटा हम आपको दिखाएंगे एक मोमेंट में। बट ये है, अब हम लोग लॉयल्टी प्रोग्राम वाला एजेंट पे जाते हैं। ये वाला एक लॉयल्टी प्रोग्राम डेटा सेट पे फाइन ट्यून्ड मॉडल है, लामा 3। तो देखते हैं। तो पहले क्या हो रहा था कि अगर आप पूछें कि कितना कैशबैक मिल सकता है वो सब, तो वो कुछ भी बना बना के बोलता था, जिसको हेलुसिनेशन भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2% कैशबैक है, बट वो रिप्लाई कर रहा है 10% कैशबैक है, कोई अपर लिमिट नहीं है। वो सब है। देखते हैं। तो लिखते हैं, डू आई गेट बैक ऑन माई परचेजेस विथ माई। ये बता रहा है कि
2% कैशबैक मिल सकता है, मैक्सिमम कैशबैक $100 पर ईयर है। बट उसके बाद ये कंटिन्यू कर रहा है, कुछ और क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका रिप्लाई कर रहा है, वो सब है। तो ठीक है, आपको क्वेश्चन आंसर कर दिया, बट ये जनरेशन कंटिन्यू किया जा रहा है, तो मे बी फाइन ट्यूनिंग में और इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, या जिस वे में प्रॉम्प्ट करके फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं वो मे भी चेंज कर सकते हैं। कि जो पेयर्स है इनपुट आउटपुट का, मे बी उसमें कुछ एडिशनल चीजें कर सकते हैं, या फिर एंड टैग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ उस टाइप का कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे ये कंटिन्यू कर रहा है जो भी है। एटलीस्ट ये 2% कैशबैक तो सही आंसर आ रहा है। तो ये हो गया हम लोग का डेमो। अभी ये हमने ये वाले डेटा सेट पे ट्रेन किया है, ट्रेन नहीं किया, जो फैशन असिस्टेंट था या शॉपिंग असिस्टेंट था, वो ये इस डेटा सेट पे रैक चल रहा है। टाइनी डेटा सेट, कुछ 3 MB का है। इसमें प्रोडक्ट आईडी होता है, प्रोडक्ट का नाम होता है, प्रोडक्ट का ब्रांड है, जेंडर है, प्राइस है, नंबर ऑफ इमेजेस है, डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट का, प्राइमरी कलर। तो बेसिकली ये डेटा सेट पे रैक सिस्टम बिल्ट है। एक और फीचर है इसका, वो है कि ये एक जुपिटर हब का एनवायरनमेंट है, जो कुबरनेटिस के अंदर ही है। यूजर नेम पासवर्ड मेरे को मिला हुआ है, क्योंकि हम किसी वे में हार्ड कोड किए हैं या किसी वे में एक्सेस कर सकते हैं, अगर क्लस्टर का एक्सेस है मेरा। तो एक ऑप्शन दे रहा है, बेसिक सीपीयू कर सकते हैं, या डेटा इंजीनियरिंग के लिए इस टाइप का इमेज यूज कर सकते हैं, या फिर डेटा साइंस के लिए जीपीयू वाला कर सकते हैं, जिसमें एनवीडिया A10G यूज होगा। और ऐसे करके इसको लॉन्च कर सकते हैं। पर ऑलरेडी तो यहाँ अवेलेबल नहीं है बता रहा है, बट अगर अवेलेबल होता तो ये चलता। पर ठीक है, एटलीस्ट अगर सब कुछ सही है तो ये चलेगा। हम पहले ट्राई किए हैं, चल रहा था। अभी अवेलेबिलिटी का इशू है, क्योंकि AWS में भी आपको एक कोटा परमिशन लेना पड़ता है कि मिनिमम कोटा बढ़ाना है आपको। कि हम बढ़ाए थे कुछ लेवल तक, बट अभी देखना पड़ेगा। जो भी है, ये फीचर है, ठीक है। अभी कुछ इनसफिशियंट जीपीयू, कुछ रीजन आ रहा है उसी टाइप का। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये भी एक फंक्शनैलिटी है इस प्लेटफॉर्म का, और इस टाइप का प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि यूजुअली डेटा साइंटिस्ट लोग का वही प्रॉब्लम रहता है कि हार्डवेयर इनफ नहीं है, या फिर लोकली ट्राई कर रहे हैं, रिप्रोड्यूसिबल नहीं है। तो वो माइंडसेट होना चाहिए कि ऑलरेडी सर्वर टाइप के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो इस टाइप का ऑप्शन होना इज वेरी गुड। अब देख सकते हैं ये लोकल होस्ट पे चल रहा है, बट एक्चुअली पोर्ट फॉरवर्डिंग के थ्रू क्लस्टर में ही चल रहा है, तो वो कोई टेंशन का बात नहीं। अब हम लोग जाते हैं मेरे विजुअल स्टूडियो में। तो पहला चीज तो ये, वो जुपिटर नोटबुक लोकल होस्ट में क्यों चल रहा था, क्योंकि क्यूब सीटीएल का पोर्ट फॉरवर्डिंग यूज किए थे हम लोग, ताकि जुपिटर हब लोकल होस्ट में चल सके। तो इस तरीके से होस्ट किए थे, तो मेरा ब्राउजर पे चल रहा था। दूसरा ऑप्शन है जो डेमो अभी आप देखें, वो ऐसा कुछ है। ये AWS है, एक यूजर है, और एक लोड बैलेंसर के थ्रू वो मेरे कुबरनेटिस एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करता है। हम लोग का एक लामा फाइन ट्यूनिंग जॉब था, जो कि एक बैच जॉब था। जो जॉब लॉन्च होता था कुबरनेटिस में, ट्रेनिंग होता था जीपीयू में, और उसके बाद कुबरनेटिस से इंटरेक्ट करता है। वहां पे एक मेरा चैट बॉट यूआई एप्लीकेशन है, जो आप देखे डेमो में। उसमें हम लोग चूज कर सकते थे कि हम लोग को शॉपिंग असिस्टेंट को चूज करना है, या लॉयल्टी प्रोग्राम क्यूए को चूज करना है। अगर शॉपिंग असिस्टेंट को चूज करें तो एक रैव का एप्लीकेशन था, जो कि मेरा एक ओपन एआई एपीआई एंड पॉइंट को यूज करता है, जो हम आपको दिखा कि बैलेंस $0 हो गया करके चल नहीं रहा था, तो $10 किए तो चलने लगा। ऐसा उतना खर्चा नहीं होता बहुत। पिछले साल या कुछ हम $20 डाले थे, चल ही रहा था, क्योंकि वैसे प्रोडक्शन लेवल पे कुछ कर नहीं रहे हैं। बट हाँ, सेल्फ होस्ट भी कर सकते, कोई इशू नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी सेल्फ होस्टेड ही है, तो हम लोग भी अपना LLM सेल्फ होस्ट कर सकते थे। बट हम लोग ओपन एआई यूज कर रहे हैं, विच इज फाइन। अब ये रैग एप्लीकेशन है, वो एक वेक्टर डीबी पे डिपेंड करता है, और जो आपको फैशन डेटा सेट दिखाए थे, उसका हर सैंपल ये वेक्टर डीबी में इंडेक्स्ड है। और ये रैग एप्लीकेशन को जब आप कुछ क्वेरी देते हैं, तो इस वेक्टर डीबी में ही वो सर्च करके आपको एक अच्छा सा रिजल्ट जनरेट कर देता है। उसी तरीके से अगर आप लॉयल्टी प्रोग्राम चूज करोगे, उसका Q&A आप कर सकते हो। जो मेरा फाइन ट्यून्ड लामा मॉडल है, जो स्पेसिफिक सिंथेटिक Q&A डेटा सेट पे ट्रेंड है,
और वो ट्रेनिंग ये बैच जॉब के थ्रू हुआ है, जो कि ये S3 बकेट में मॉडल वेट्स को सेव कर दिया है। बट जब हम डॉकर बना रहे थे इसके लिए, ये लामा फाइन ट्यून मॉडल के लिए, तो डॉकर बनाते समय हम ये S3 बकेट का वेट को उस डॉकर वाले फोल्डर में डाले थे और फिर डॉकर बिल्ड किए थे। तो एक्चुअली डॉकर इमेज जो है मेरा विथ मॉडल वेट्स वो बना था। तो एक्चुअली आप देखोगे तो चैटबॉट का एक डॉकर इमेज है, रैग एप्लीकेशन का एक डॉकर इमेज है, लामा फाइन ट्यून मॉडल का एक डॉकर इमेज है, और ये ट्रेनिंग जॉब का भी एक डॉकर इमेज है। तो देख लेते हैं। वैसे बहुत इजी है बनाना, हम दिखाएंगे आपको। बट अभी के लिए डॉकर इमेजेस, तो हम अभी के लिए डॉकर वेबसाइट में डाले हैं। आप AWS में भी डाल सकते थे, कोई इशू नहीं है। तब देखोगे कि ये वाला तो मेरा बस एक बेसिक सा हगिंग फेस से लामा 3 डाउनलोड किया, उसका डॉकर बनाया, उसको होस्ट किया, और उस लामा 3 से आप चैटिंग कर सकते हो। बस बेसिक। तो ये वाला उसके लिए था। उसके छोड़ के 4 इमेजेस है हम लोग का जो यूज हो रहा है। एक चैटबॉट UI है, एक रैग ऐप है, ये लामा फाइन ट्यून के अंदर 2 है, ये जो लेटेस्ट वाला है ये ट्रेनिंग जॉब है, ट्रेनिंग जॉब के लिए है, ये डॉकर इमेज, और ये INF जो है वो इन्फरेंस के लिए है। तो ये 4 इमेज जो है, चैटबॉट UI, रैग ऐप, लामा फाइन ट्यून के अंदर 2 है, ये सब से मेरा ये वाला एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा। और हम लोगों ने पहले भी देखा ही था कि एक पब्लिक प्राइवेट सबनेट बनाया था, उस पे 2 EC2 डाल के नेटवर्किंग का समझ आया था। अब ये चीज हम लोग मैनुअली नहीं कर रहे हैं, बट आप देख सकते हैं कि जो रियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो मच मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है जो सीखते समय हम लोग बनाते हैं उससे। ये भी एक्चुअली सिंपल ही दिख रहा है, क्योंकि एक्चुअली वेरी कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि ये EKS इसमें मैं दिखा रहा है आपको, कारपेंटर है, लोड बैलेंसर कंट्रोलर है, EC2 इंस्टेंसेस है, नैट गेटवे है, ये है वो है, इंटरनेट गेटवे। बट ये भी बस सिंपलिस्टिक व्यू है, क्योंकि इस EKS के अंदर भी आपको ये सब दिखेगा। फिर जुपिटर हब था जो हम लोग दिखाए थे, वो भी इसका पार्ट है, बट इसमें नहीं दिखा रहे हैं। और फिर बेसिकली EKS जो कुबरनेटिस सर्विस जो है, उसमें एक EKS कुबरनेटिस का कंट्रोलर होता है, K8 कंट्रोलर। K8 बेसिकली कुबरनेटिस होता है, उसका कंट्रोलर होता है। और जो हम लोग का कॉन्फ़िग फाइल होता है, उसमें एक डिजायर्ड स्टेट होता है, और हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं इसका डिजायर्ड स्टेट्स को भी और एक्चुअल स्टेट्स को भी। और एक्चुअल स्टेट और डिजायर्ड स्टेट में अगर कुछ गैप होगा तो हम लोग ट्राई करते हैं कि एक्चुअल स्टेट को डिजायर्ड स्टेट के क्लोज ला पाए। ये K8 कंट्रोलर करता है। तो एक्चुअली कुबरनेटिस के अंदर बहुत कुछ होता है। ये कारपेंटर बेसिकली एक एड ऑन है कि नहीं पता, बेसिकली एक एप्लीकेशन है जो कुबरनेटिस के अंदर चलता है, जो ऑटो स्केलिंग हैंडल कर देता है। और भी तरीका ऑटो स्केलिंग हैंडल करने का, बट यहाँ पे कारपेंटर के थ्रू कर रहे हैं, तो उतना समझने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक होता है, ये ऑलरेडी सेटअप रहता है। बट हम बस बता रहे हैं कि ये तो बहुत ही सिंपलिस्टिक व्यू है, और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है जो रियल होगा एप्लीकेशन। सेकेंड है कि डॉकर। तो हम लोग का जो सारा ये एप्लीकेशंस है, ये डॉकर इमेजेस के थ्रू एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो पहले वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहले क्या होता था कि वर्चुअल मशीन्स होता था। तो आपका सर्वर है, और समथिंग कॉल्ड हाइपरवाइजर, जो अलाउ करता है बहुत सारा वर्चुअल मशीन रन करने के लिए। और एक वर्चुअल मशीन के अंदर एक फुल्ली फ्लेज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके बाइनरीज और लाइब्रेरीज होते हैं, और एक एप्लीकेशन होता है। ये पूरा पैकेज को वर्चुअल मशीन बोलते थे। तो ये काफी हैवी वेट है, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसका पार्ट है। अब डॉकर या फिर कंटेनराइजेशन क्या किया है कि जो गेस्ट ओएस है वो शेयर्ड है। तो गेस्ट ओएस कॉमन है, कंटेनर इंजन होता है, और जो कंटेनर होता है उसमें बस एप्लीकेशन बाइनरीज और लाइब्रेरीज होगा, और ये शेयर्ड गेस्ट ओएस को ही यूज करेगा। और ये एक आइसोलेशन है एक तरीके का। इनफैक्ट आप अगर थोड़ा सा कंटेनराइजेशन के बारे में पढ़ोगे तो लिनक्स का कुछ कुछ होता है फीचर्स जो आपको कंटेनराइजेशन में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, there's something called C groups or control groups in Linux kernel. There's something called namespaces in Linux kernel.
तो ये नेम स्पेस और सी ग्रुप्स का कॉम्बिनेशन से आप रिसोर्सेस का आइसोलेशन कर सकते हो। सीपीयू, मेमोरी, नेटवर्क, प्रोसेसेस और ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस। ऑप्शनली ये लिमिट सब एनफोर्स कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो ये कर्नेल का फीचर्स को यूज करके ये कंटेनर्स का एनवायरनमेंट बना है, और डॉकर भी यही किया है। इनफैक्ट यूट्यूब पे एक बहुत अच्छा वीडियो है जो बोलता है कि लेट्स बिल्ड डॉकर इन 1 आवर और समथिंग, 45 मिनट्स। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का समझ अच्छा है। वो वीडियो इंटरेस्टिंग है, ऑल्दो एज अ बिगिनर ना देखें, बट देख सकते हैं अगर माने तो, ऐसे ही इंटरेस्टिंग लगेगा। और उसके बाद फिर ये तो हो गया सब कंटेनराइजेशन। और कंटेनराइजेशन का एक सिंपल तरीका जो आजकल बहुत कॉमन है वो डॉकर, विच इज अ प्रोडक्ट इन अ वे। डॉकर क्या होता है? एक डीमन होता है जो बैकग्राउंड में रन होते रहता है मेरे कंप्यूटर में। और डॉकर इमेजेस होता है जो कि एक फ्रीज्ड स्नैपशॉट जैसा है एक एनवायरनमेंट का। इमेजेस अगर नहीं है ऑलरेडी बना हुआ तो बिल्ड हो सकता है। बना हुआ है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। अगर बना हुआ है तो उसका कंटेनर्स बना सकते हैं, वो चीज बेसिकली रनिंग वर्जन ऑफ द इमेजेस। कंटेनर जो होता है वो एक्चुअली रन हो रहा होता है, इमेज जो वैसे एक स्नैपशॉट होता है। और इसको बनाने के लिए बहुत सारे डॉकर के कमांड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉकर बिल्ड समथिंग, जिसको यूज करके हम लोग डॉकर इमेज बिल्ड कर सकते हैं। डॉकर पुश हम लोग कर सकते हैं, जो बनाया हुआ इमेज है उसको कोई कंटेनर रजिस्ट्री में पुश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉकर का खुद का रजिस्ट्री है जो अभी आपको दिखाएं। एडब्ल्यूएस का भी खुद का रजिस्ट्री है जिसको ईसीआर बोलते हैं, इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री। वैसे गूगल का भी खुद का होगा, एश्योर का खुद का होगा। तो सबका अपना अपना रजिस्ट्री है। आप खुद का भी सेल्फ होस्टेड भी कर सकते हैं। तो जैसे कुछ कुछ टूल्स है, जैसे आर्टिफैक्टरी एक टूल है, ये हार्बर एक टूल है जो आपको रजिस्ट्री सेल्फ होस्ट करने के लिए अलाउ करेगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सबका बाहर का यूज करना है आपको, आप खुद का भी कर सकते हैं। और कंटेनर और इमेज में वही डिफरेंस है कि कंटेनर एक रनिंग इंस्टेंस है कंटेनर इमेज का, और कंटेनर रन टाइम में वो रन होता है। और जो डॉकर डीमन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्रिएट और मैनेज करने के लिए इमेजेस को। कंटेनर को रन करने के लिए कोई इमेज को आप रन कर सकते हो तो वो रनिंग द कंटेनर्स। आप नेटवर्किंग सेट कर सकते हो, स्टोरेज सेटअप कर सकते हो, फोल्डर्स को माउंट कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। हम लोग को एकदम बेसिक लेवल की जरूरत है। तो डॉकर बिल्ड किया, डॉकर पुश किया जो आउटसाइड वेबसाइट में चला जाएगा, डॉकर पुल किया डाउनलोड के लिए, डॉकर रन लोकली रन करने के लिए। यही सब कुछ कुछ बेसिक कमांड्स है जिसका जरूरत होता है। डॉक्टर टैग होता है, बस रीनेम करना है अगर। और इसके बारे में तो हम लोग एक बार बात कर ही चुके हैं। तो पहला चीज क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना है। अप्रोक्सीमेटली सेटअप हो जाता है, थोड़ा बहुत कभी कभी फिक्स करना पड़ता है, बट आप देखोगे। अच्छा, एक और चीज है जो शेयर करना था हमको, कि कौन सा रिसोर्स हम यूज कर रहे हैं। तो ये बुक है जो हम यूज कर रहे हैं एज अ रिसोर्स, कुबरनेटिस फॉर जनरेटिव एआई सॉल्यूशन, अशोक श्रीराम सुक्ति गुप्ता। अब हम ये तो नहीं बोलेंगे कि ये जेएनएआई का बेस्ट बुक है, बट मेरा पॉइंट है कि मेरे लिए सही था, क्योंकि हम तो 10-15 साल से मॉडल्स ट्रेन वेन कर रहे हैं। तो थ्योरी, मैथ्स और ट्रेनिंग एस्पेक्ट में आई हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। हमको कुछ ऐसा चाहिए था जो थोड़ा सा इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स और प्लेटफॉर्म एस्पेक्ट्स में विजिबिलिटी दे हमको, और जिसके लिए ये बुक मेरे लिए एटलीस्ट बहुत परफेक्ट लगा मेरे को। और ये बहुत क्लोज है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट से। अगर आप किसी कंपनी में भी काम करते हैं, you'll feel like you're very close to what you would do in a company, in a team, if you read this book, versus if you read LLM engineers handbook। बहुत फैंसी वैंसी लगता है, but I didn't like the kind of choices they have made. Of course it's good for learning it, but like half of the book is like just training some model and getting data
for some toy problem which I am not interested in. So I lost interest in that book very soon after reading a chapter or two, because I wouldn't make those choices, and I cannot imagine making those choices in a company. We have to make better choices. Uh, and of course, there will be a team and you work as a team. But given I want to learn it, that book was not appropriate for me. So this is a book which I am referring to. In fact, the demo I showed you is just covered in the first 100 pages of this book. After those 100 pages, there's chapters on scaling, there's chapter on cost optimization, there's chapter on networking best practices, there's a chapter on security best practices, there's a chapter on optimizing GPU resources, and there's a chapter on Gen AI ops, the chapter on observability and stuff like that. And these observability, which they are doing, is to open source things like Langfuse, which you can self-host, Grafana, Prometheus, OpenTelemetry, because you might also want to observe the hardware utilization and stuff like that. Anyways, the point is this book is self-contained and this demo has been done in the first 100 pages itself. After that, there's also a lot of other engineering aspects, I would say, which I feel I want to read still after having this demo fully functional. And I will do read it. But anyways, just sharing that this is the resource I will be using, or I have actually used. And I continue to read this book. I just wanted to share the current state of the project. Yeah. After that, in the book, you'll go through the book and you'll see it explains some Terraform files, which is basically infrastructure as code. And this is actually, you need a lot of experience and it's quite complicated. I also don't understand all of it, but I'm just trying to get a sense of it. And what I'm trying to do is I am asking Claude to explain me each part of this code. So in terms, I can read these things, but I cannot maybe write it in my current situation. But then that's fine. I'm a data scientist. I don't want to be some expert in Terraform or something, but I've also tried to figure out some Terraform tutorials on YouTube, which varies from 4 hours to even 2 hours to, I guess, uh, up to tens of hours, 10 hours or something. There are all these tutorials which will teach you Terraform. So you can try to maybe use those to get more sense of these things. But I think Claude will also do a pretty good job of these things. But in the end, these Terraform files are just description of infrastructure. There's one for Quadrant, which is pretty small one. Anyways, so once you have these infrastructure Terraform files, you can go to this Terraform AWS folder. You can do Terraform in it, which will create this .terraform folder. Then you can do a Terraform plan and it will give you the whole plan of what it will do. And then you can do a Terraform apply auto approve. And that will kind of create an infrastructure for you. Similarly, it will also create a Jupyter Hub for you. You can check by running the command helm list -in Jupyter Hub to see if it's created. You can also see kubectl get node NVIDIA GPU present. Are these nodes available or not? You can also see how you can run Jupyter Hub locally by this port forwarding. And with that Jupyter Hub, you'll be actually running it on the cloud. And then you have this Terraform output Jupyter password, which kind of gives you a random number, which is the password for your login. And username you will know because it's in the config. And then you can also see, for example, if you go to the Jupyter Hub and create a GPU node for running the notebook, if you run this command, you can see that it's created. Of course, you have Docker login, which can help you log in. You have Docker build -t, the name of the image, and then dot. So this Docker part, okay, let's go back. You'll see these folders. For example, RAG app is a folder, Llama fine tuning is a folder, inference is a folder, chatbot UI is the folder. Bedrock RAG app, you can ignore because I have myself not used it. But each of these folders will have a couple of files. For example, if you go to this chatbot UI file, you'll see that there's a grad.io app file, which kind of creates a UI for us.
which we have just used. And it has two API endpoints it is using, one for our shopping assistant and one is for our uh, Q&A assistant or FAQ Q&A assistant. Of course, you can go to these places and you can see the endpoints. These names are actually coming from services we have launched before. Anyways, for now, let's not get into the details. But the point is, each of these folders will have a Docker file, which kind of creates an environment for you. For example, here we are starting from a base image called Python Slim, which is basically a lightweight, less hard disk consuming image. Then you set up your working directory, you copy the requirements.txt file from here to your image. Then you install all of them into your image, you expose the grad.io port, and then you can copy the grad.io file inside your app folder, and then you can uh, run your grad.io app. This is the Docker file definition. And once you have this definition, you can obviously always build the image. For example, let's say into chatbot UI folder, and you'll see these files, Docker file, grad.io, etc., etc. And I've already logged into my Docker, so I don't need to worry about it. And to run build command, you don't need to be logged in, by the way. So I can just do a Docker build, and then I'll do -t, then the name of the image, then dot, which tells me where the Docker file is, and it's in the same folder. I run it, and you'll see that the image has been created. Now, I can also use Docker tag to change the name of the image. For example, earlier my name was chatbot test. Now I'm changing the name chatbot test to this dksau/genai8 colon. So genai8 is a repository name, colon something is the image tag, which is chatbot test in this case. And I run the tag, so I've renamed my image. And this is actually a format which is compatible with the Docker website. So if I do a Docker push on this, it will actually push it to the website. I'll show you. See, it's uploading to docker.io/dksau/genai8, which is my repository. And it is showing me that it has already uploaded. Now you'll see that if you go to this genai8, you'll see this chatbot test, and it says that it has been pushed in less than a minute ago, which means that the one which you just pushed is this one only. If you go in, you can also see other details. For example, the size of it is 132 MB, which is much smaller. For example, if you go to some other one, it will be much bigger. Let's say this inference one, which has the whole model inside it, the Llama 8 billion model. This is 11 GB. First is the model itself is large. On top of it, you need a lot of drivers to run it on GPU and stuff. And you have this NVIDIA image, which we are using as a starting point, right? Which is very space consuming. So this is 11 GB. Anyways, the point is, I've shown you one example. I've shown you one example of how to create an image. I'll just clear this up and I'll show you history. And if you see last few lines, I did a Docker build -t for tag. This will build it locally. And I can change the tag name with this command. And another thing is, how did I get this thing, right? This name you can get at the website. So I'll show you again. Then you can do a Docker push with that name, which you got from the website, and that tag name, which you have renamed it again. This will be pushed to the website. Now you'll ask me, how did I get that name? If I open this, you'll see in this corner. You see in the corner, you can see Docker push and then the name. You see dksau/genai8 colon tag name. And tag name is this chatbot test which we provided. And this is how you know that this is the thing which you want to use in the Docker push. So that's how you create a Docker image. And you do the same exercise for this chatbot UI, which we have just done. You do it for inference, you do it for training job, you do it for RAG app. 4 of them we need for our application. You build a Docker and
I've shown you that in the Docker website, I have those images already available. So once you have done that, it's not as simple as I'm saying, but building the image is pretty simple. But once you have built the image, you might want to uh, like build services for your thing and stuff, right? For example, uh, if you if you are into this Llama fine-tuning folder, you might want to change Llama fine-tuning job.yaml in certain ways. For example, you might want to update the ECR image or S3 bucket name or Hugging Face token. I'll show you. I'll go to Llama fine-tuning, I'll go to this job, and you see there's some configuration in here. Now, what do you want to change here? Other things will fix. First is the kind you have to see. It's a job kind, which is a bad job. Then these things you can just keep it fixed. You have to change the image name, whatever you have. And then you have to change certain things. For example, model asset bucket, the bucket name where it will store the model weights after fine tuning, Hugging Face API, in case we wanted to get the image into our job. And then actually we need it because we want to get to use Hugging Face, which will download the image locally and then fine tune it and then store it. And then we need train dataset file and evaluation dataset file. So these things we have to change in our config. Otherwise, we are good to go. But once you have done those things, config change, you can just run this command called kubectl apply -f, and then the same file which I just showed you. And this will launch that kind of object into our Kubernetes. kubectl is the CLI tool for doing something in the Kubernetes. And then kubectl logs -f, this job name. You can see the status of the job, including everything it is printing, all the epochs, performance at each epoch, and all that stuff you can see in these logs. So that's your fine-tuning training job. Similarly, we do the same exercise of uh, building, tagging, and pushing. But before we do that, this first job would have created some model file weights in my S3 bucket. So what I will do is I'll do AWS S3 sync and then the location, and then I'll copy those weights to this model assets folder inside the inference folder. And once it is available there, I can do a Docker build, and I can do a Docker tag, and I can do a Docker push. Here the image name is actually the one which I am, if you were to use like AWS as a repository registry, then you can use AWS also. But I showed you how to use the Docker version of registry. It's up to you. I'm using the Docker version. Earlier I was using this one, but when I was destroying my infrastructure, it was also destroying my images, or I had to destroy the images as well in order to clean up everything. And it was very tedious for me to build the images again and again whenever I want to read one more chapter of the book or one more page of the book. And I didn't want to go through the pain. So what I did was I created my images. I pushed it to my external Docker so that I'm free from this Docker repository creation. But still, when you launch the infrastructure, it will give you some commands which can guide you to certain things, which is fine. But once you have created your Docker image, which is the first part, which I'm shaded, after this pushing, there's a Docker image somewhere out there, in somewhere, right? So in the YAML file again, in this fine-tune inf deploy.yaml, you change the ECR image name and the Hugging Face token. I'll show you again. You go to inference folder, and then you go to your YAML file. Now you'll see there are two kinds of objects being created. First is the deployment type, and what it needs is the image name. And you can see the inference tag here. And it needs the Hugging Face token as well. And then the service which I want to launch. And services could be of many types. We are using this cluster IP type, and this will kind of allow us to host our fine-tuned model as an inference service. So you can use kubectl apply -f fine-tune in deploy.yaml
where we have already updated the ECR image name and Hugging Face token name, Hugging Face token. And once you do this, you can see if it is launched via kubectl get this, and at least it will tell you the state of it. You can run it again to see if it's in the ready state or not, or it's available 1 by 1, 2 by 2, whatever. Similarly, we also need two more uh, Docker images, which you can easily generate. Docker build rag, Docker tag, Docker push. You do that exercise. Of course, once you have your Docker image, you can go to this rag deploy YAML file and you can feed in your OpenAI token. I'm not showing you the OpenAI token because it is associated with billing. And then we have this ECR image name for this RAG app, which you can again see in my Docker website. And then finally, once you have it ready, you can do kubectl apply -f rag deploy.yaml and it will deploy for you what you need. Of course, you could also do a config map of secrets.yaml. These things are available as objects in Kubernetes. I'm not doing it. The book has not done it, but I'm telling you that there is a secrets object. There's also a config map object, and these objects should be used. You could also have like a secrets template, which you can fill it through the environment variable, so it will never be in your code base. Because even if you have secrets.yaml file, you will have to have your secrets inside it. And that is not a good exercise because eventually you would want to push this infrastructure code or config YAMLs to your GitHub. Mine is a private repository, so I don't care. But ideally, you should have a secrets object where you have all these things, not in the main rag deploy YAML thing. Plus, secrets should also not be hard coded. It should be templatified in a way so that there should be a way to kind of fill that template with environment variables in your computer or through .env file, which we never push to Git. Maybe some other day I'll show you my video to MP3 code so that you understand these structures, because there I have done it in a way which uses the secrets template. Anyways, right now it doesn't matter. We have hard coded the OpenAI token in this rag deploy YAML file, and that's fine for our use cases. We just do kubectl apply -f this thing, and it just runs. We also do kubectl apply -f quadrant restore job.yaml, and that kind of launches everything for this rag app. And then finally the chatbot thing again, we build our Docker image in the chatbot thing. We have already shown you exactly. We have pushed it. I've shown you. So it's simple. The only thing you have to do is you go to this chatbot deploy YAML file and you update your ECR images, which I can again show you, I guess. See, I've updated DKSAU GenAI K8 chatbots and the endpoints for RAG and the fine-tuned model. Yeah, this is the YAML file. So I just run kubectl apply -f chatbot deploy.yaml again, and it will launch the chatbot service along with load balancer and stuff. And finally, you need the URL which you can use to show your demo. For my case, it's a demo because it's not a product. So you can export this. You can run this command and export it to this variable. You can echo it, and it will give you a link. You can use that link, and if you run it in the browser, it will work. And everything is hosted in the cloud. And this is exactly how it is. I just showed you I have $10 in here in OpenAI, which I'm using for this RAG application, but I could have self-hosted like I did here. So it's not a big deal to self-host as such. But some of the OpenAI models are really large, and because so many users are using it, they are able to afford that kind of hosting. We can never
host a 400 billion model or 100 billion model. I mean, maybe we can, but I will not. Let's say that, right? Uh, but of course, we can host up to like maybe 7 billion or 3 billion. We can do that. We can afford that. It's actually not cheap at that level also, because I would have to have a reasonably large computer. Even for training, like with LoRa and all, I still need like, I don't know, maybe an 8 GB machine or a 12 GB machine. I might need, by 8 GB machine, I mean 8 GB of GPU memory. So with LoRa, if I need that much, you can imagine what I would need, right? Like maybe 5x of that or something. So, anyways, I don't want to go there, but with LoRa, you can go down a lot. With bits and byte, you can have a quantized version of it, which is called QLoRa in a way. It's quantized LoRa, which can easily be done with like, let's say, 3 GB of GPU memory, uh, which I have done, I guess. But yeah, that's up to you how much you want to quantize, how much you want to do QLoRa, LoRa, what parameters. You can reduce the rank and even reduce the amount of memory even further. But what I can tell you is at the least 90% memory reduction can be done via LoRa techniques. So if I'm saying 3 GB, 10x of that you would need, which is 30 GB at least. And in some cases, the reduction is 99%. For example, if you are doing quantized LoRa or something, it may be 99% reduction or whatever. Right? So, anyways, the point is we have hosted this as a demo. It's pretty scalable. The first 100 pages of the book actually helps you get to this demo. Of course, it will not work out of the box. LangChain library itself has changed and stuff like that. So you have to fix it. But that's the way the learning is, right? Like if you just copy the code and it runs, there's no learning. If you struggle a bit, you will learn. And another thing which I do is like I use Claude to document or generate tutorials for my code and then we go through it, which helps me to understand these infrastructure things better. I don't know if I will get time or not, but I'm also planning to watch Terraform tutorials, maybe the 6 hour ones or something. Maybe not. I don't know if I have time or not because that's not my priority right now. But I'm happy with this demo. I'm happy with what I've built. I'll continue to finish the book because I'm just 1/3 into the book and I've created this demo. Now I have to read about best practices of networking, scaling, cost optimization, security, optimizing, observability of various kind. For example, LangFuse is something which will help you with observability inside the LangChain code. Because if you have like multi-step agent or like if you have multi-steps in your LangChain or in the chain, you might want to like analyze the intermediate results because the application gives you the end result. But if it's not satisfactory, you might want to see the intermediate results. How will you do? That's a kind of observability. LangFuse is like an option to self-host that kind of observability solution for LangChain. There's Grafana for visualization. There's OpenTelemetry and stuff like that. So there are a lot of monitoring tools. There are various levels of monitoring. For example, I might want to see the hardware utilization, RAM usage, GPU usage, whatever. All that stuff. Uh, so basically, it's a mix of machine learning observability and hardware and networking metrics as well. Uh, Disaster recovery, how to build in resiliency, Gen AI coding assistants, and all that stuff. Anyways, the point is that it's a book which suits my needs. You have to decide which book suits your needs. I'm super comfortable with the mathematics of ML, the mathematics of Gen AI. In a day, I can read a new thing. Uh, I'm super familiar with model training and debugging. Uh, so that is my comfort zone, and that's why I will not go to those books which are teaching me the same thing again and wasting my time.
and I wanted to learn something, and I chose a resource according to my needs. But to be employable, you also need to know the maths and uh, to to know the machine learning or data scientist aspects of it is also something which you need. For example, recently I was looking at this job opening of an applied research scientist at AMD for Gen AI, which revolves around agents and fine tuning and stuff. And any job which requires fine tuning, you need to be pretty good at uh, deep learning and architectures and tricks to stabilize training, the modern things which are there and stuff like that, right? So I would say uh, that choose a resource according to your goals. Uh, and of course, you can have a very grand goal and you want to learn everything, but it will not happen in a few months. You have to plan it. You have to choose resources according to your short-term goals and long-term goals. I would have been fine without this application. Like I am pretty good at what I do, and just in mathematics of ML and training part of it also, I can get a pretty good job. I know enough of programming also. So I would have been fine without it also, but it's my curiosity. I am learning it, and you should discover your own thing. But yeah, I mean, I just wanted to share what I am up to, and I hope this gives you some level of guidance of how to do it. One more thing I wanted to show you is just how it looks like, right? Like, okay, so what we can do is we can do a cube CTL this, but I'll first delete this object. So what it will do is it will delete the deployment and the service. And this is actually the front end, so my demo will not work, obviously. And you'll see that it's taking a moment to delete it. And then that's how easy it is. I'm showing you commands, but that's how it works. Similarly, I can just do an apply and I can recreate it. That's it. Of course, it takes a moment. Like for example, there is this application called K9, and this K9, what it gives you is like a dashboard of everything. Okay. So the deployment is already running. Some okay, it has never even run. Okay. Anyways, you get the idea, right? You can navigate through it. See, so many things are running in here, all the pods. The scheduler, there's a RAG app, there's Quadrant, Jupyter Hub, some NVIDIA discovery features, some device plugins, some fine-tuned deployment. And this could be because this thing needs a GPU, and maybe availability of GPU is an issue. And yeah, basically depends, right? For example, I always have this max and min number of pods I need for a certain service. And if it's very low, then you don't have enough hardware or whatever it. Anyways, I think you get a sense of this. And the point is this chatbot thing is running because I deleted it, I ran it again, it's kind of working. And what else? I think we are done. It's kind of super simple. Uh, in terms of properly using the Kubernetes thing, I can make a video on that video to MP3 thing I did, which kind of gives you a high level structure of Kubernetes command, kubectl and stuff, and the objects required to uh, make an application, backend at least. So, I don't know why I switched to English again. So, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी कि मैंने बीच में इंग्लिश में स्विच कर लिया, कब किया ध्यान भी नहीं है, बट ठीक है, मतलब कम से कम आपको कुछ गाइडेंस मिला होगा। थैंक यू।